only way to conquer your fear is by facing it with self-belief. Today, we are so proud to present one such fearless personality, a warrior, Captain Yashika Tyagi. Thank you. We welcome you, ma'am, on our show, StreeMing. Thank you for joining us today. And I would quickly like to give your introduction to our viewers. So, Captain Yashika Tyagi is a Kargil war veteran. She's a warrior mindset coach, a corporate leadership multiplier, and Josh Talks and TedX speaker. She holds the distinction of being the first lady army officer from the logistics wing to get posted in the extreme cold conditions of Leh and Kargil and to serve in the Kargil war. She actively participated in Operation Vijay. She completed her service in 2001, and since then she has been working in the corporate. She is also a motivational speaker. She now undertakes SSB boot camps for defense aspirants. She also hosts her YouTube channel, which is named as Shaurya Tales, and where she shares the stories of bravehearts and various military and defense operations. She's a wife of an army officer and a mother of 2 sons. So we are so glad to have you with us today. Thank you for joining us, ma'am. Thank you so much, Maulshree. I am totally, what do you say? I had the celebrity wali bhavna when you were giving all this introduction. You are more than celebrity to us. Thank you. Yes, ma'am. So, ma'am, firstly, I would like to ask you, please tell us about your journey from being the first female army officer to have served in the Kargil war to being a warrior mindset coach. Oh, ये पूरी जिंदगी की कहानी है, Maulshree. What you have asked me in one question is my life in a nutshell, right? Well, फौज में तो आना ही था, वर्दी तो पहननी थी. That was a thing as clear to me from very early in my life that I have to wear uniform. Since I come from an army background, और छोटी उम्र में फादर को हमने खोया, तो वो एक फौज के अंदर आने का और वर्दी पहनने का एकदम जुनून था. So it just so happened that in school I would be in Scouts and Guides, फिर NCC, कि बस कैसे भी वर्दी मिल जाए, बस वर्दी पहननी है. और जैसे जैसे कॉलेज खत्म हो रहा था, now the thought was coming कि अब आगे लाइफ में वर्दी पहननी है, ये कैसे चलेगा? So then I thought that I should go into UPSC clear करके I should go into IPS. Because till that time there was no conversation of girls coming to army. ऐसा कुछ था ही नहीं कि लड़कियां फौज में आ सकती हैं. तो सिर्फ वर्दी पहनने का एक ही तरीका था कि पुलिस में जाओ. Kiran Bedi was a very big impact on my mind during those days. वो एकदम डंडा मैन थी. और किरण बेदी को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुई. तो एक मैगजीन से उनका फोटो काट के एक पुरानी कॉपी के गत्ते पे चिपका के ऐसे स्टडी टेबल में रखा, और फिर यूपीएससी की पढ़ाई शुरू हो गई. यूपीएससी की पढ़ाई शुरू हुई. बाय द टाइम माय कॉलेज वाज कमिंग टू एन एंड, गर्ल्स की एंट्री फौज में शुरू हो गई. वो मैं हमेशा उस शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग याद करती हूँ कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहें तो कायनात उसे आपके लिए लाती है. तो बस मेरा वही मोमेंट था. It happened for me exactly at the right time. और I cleared my army entrance SSB exam in first attempt. Academy की ट्रेनिंग बहुत रगड़े वाली थी, क्योंकि ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होती है और मिलिट्री की ट्रेनिंग तो और भी जबरदस्त. So ये विचार मन में था कि अकेडमी में आए हैं तो मतलब कोई चीज में पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ के करना है, आगे बढ़ के करना है. एंड राइटली सो, जब मेरा पासिंग आउट परेड हुई, मैं अपना कॉन्टिजेंट कमांड कर रही थी और मुझे मेडल मिला. फिर फौज की जर्नी वहां से शुरू हुई. आई वॉलंटियर्ड फॉर डिफिकल्ट एरिया पोस्टिंग, और मुझे नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन राइनो की पोस्टिंग मिली.
तो बड़ा मुश्किल दौर था। ऑपरेशन राइनो एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन है जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में फौज चलाती है। तो उसका हिस्सा बनी। जब वो टेन्योर खत्म होने को आ रहा था तो मैंने फिर वॉलंटियर किया एंड नाउ आई वांटेड टू गो टू अनदर डिफिकल्ट एरिया। मतलब वो जुनून था दिमाग में कि अ, ये जो चंद साल फौज से मिले हैं इसमें अ, अपने अपने को टेस्ट करना है। तो फिर से एक डिफिकल्ट एरिया पोस्टिंग मिली। अब की बार आई गॉट हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एरिया। वहां तक अभी कोई लॉजिस्टिक्स ऑफिसर की पोस्टिंग लेडी ऑफिसर की नहीं हुई थी। सो आई बिकेम द फर्स्ट वन। तो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हाउ हाई इज हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि एक आइडिया लगना चाहिए। सो 12,000 फीट से ऊंचाई शुरू होती। रैरिफाइड एटमॉस्फेयर माने प्लेन्स में जितना ऑक्सीजन है उसका भी 50% कम वहां ऑक्सीजन है। सांस नहीं आती। आप थोड़ा सा भी चलते हैं आप हाफ जाते हैं। आपके लंग्स एकदम इस तरीके से ऑक्सीजन को चीख चीख के मांगते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद आपका शरीर उसमें ढल जाता है एंड देन यू आर यू मूव ऑन विद दैट। और ठंड ठंड इतनी मेरी यूनिट सियाचिन ग्लेशियर को सपोर्ट कर रही थी और सियाचिन ग्लेशियर में -50 तक टेम्परेचर जाता। तो इस तरीके से हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में काम करना सीखा। बहुत किसी फील्ड में आप जब पहले होते हैं तो नेचुरली आपको कई तरीके से परखा जाता है और ये खुशकिस्मती होती है कि आपको कोई परखे। मैं ये मानती हूँ कि ये जो जो अ, एक किसी की एक कहावत मैंने सुनी थी कि रद्दी को भी तोला जाता है जब उसे बेचते। तो आप तो भारतीय सेना के अफसर हैं। यदि आपको कोई परख रहा है कि आप इस काम के लिए फिट है या नहीं, तो मुझे लगता है ये खुशकिस्मती है, क्योंकि ये मौका बहुतों को नहीं मिलता। सो हाई एल्टीट्यूड में जैसे मेरी ट्रेनिंग, मेरा 2 साल खत्म हो रहा था, वो टाइम था जब कारगिल की लड़ाई शुरू। और कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली मैं लॉजिस्टिक्स विंग से भारतीय सेना की पहली महिला अफसर बनी। जिस समय कारगिल की लड़ाई लड़ी जा रही थी मैं प्रेग्नेंट भी थी। तो पेट में बच्चा लेकर लड़ाई करना, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने ये भी किया है। और सिर्फ वो एक मन में एक अपने ऊपर एक शान फील होती है कि ये मौका मुझे मिला है, ये मौका मुझे मिला है और इसको मैंने ऐसे पकड़ के रखना है दोनों हाथ से। और वो लड़ाई हमने जीती। देश ने देखी है किस तरीके से वो जंग लड़ी गई। और बस फिर उसके बाद जब मैंने फौज व्हेन आई हंग माय बूट्स, जिंदगी आगे बढ़ी तो कई जगह काम किया। मतलब आप मेरा रिज्यूमे देखेंगे, जैसे मौलश्री ने भी बताया, तो वो एकदम एक रेनबो की तरह है। इतनी जगह काम किया और हर जगह जाके नई चीजें सीखी, हर जगह जाके एक नया स्किल सेट मिला। तो वो एक पर्सनालिटी को बहुत इंप्रूव करता है। आप एक हर जगह एक अलग अलग डिमेंशन मिलते हैं। और अब मुझे लगता है कोरोना ने मुझे ये सिखाया कि हम घर में बैठकर जंग कैसे लड़ सकते हैं। तो घर में बैठकर एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक वॉरियर माइंडसेट कोच, घर में बैठकर कैसे बच्चों को फौज के लिए तैयार करना है और कैसे कॉर्पोरेट्स को उस वॉरजोन से डील करना सिखाना है कि हम हारे नहीं, हम आगे बढ़ते रहे। और बस यही है मेरी कारगिल वॉर वेटरन से वॉरियर माइंडसेट कोच तक की जर्नी। आई एम अ जोश टॉक स्पीकर, आई एम अ टेड स्पीकर। मतलब मैंने लॉकडाउन को और उसके पहले के 1 साल को जिया है, एक एक सेकंड, एक एक सेकंड। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे आज सुनने वाले, जिन्होंने एक नया डायमेंशन देखा अपने अंदर कि हर चीज के लिए जरूरी नहीं है कि आप घर के बाहर निकले। जब घर की 4 दीवारें आपका जीवन बन जाती हैं, आपकी दुनिया बन जाती हैं, तो फिर आगे कैसे बढ़ना है, हार नहीं मानना। सो आई होप मैंने आपका आंसर देने की कोशिश की। Thank you so much, ma'am. Your life journey is so inspiring for all of us. And as you told, like when you were appointed
to serve the Kargil war, and you were pregnant. So, what was your thought process? What was your juggling between motherhood, emotionally, mentally, and physically? Oh, it was a whirlwind. It was, I will not be very, what do you say, a false bravado that नहीं मुझे डर नहीं लगा. मुझे डर लगा. मैं इंसान हूँ. मुझे डर लगा अपने उस अनबॉर्न बच्चे के लिए जो मेरे पेट में था. क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की प्रेगनेंसी नॉर्मल समय में भी आसान नहीं. My body, as yours, I'm sure, our bodies are tuned to the lower altitudes. Right? हमारी शरीर की बनावट ही ऐसी है कि हम हाई एल्टीट्यूड में पैदा नहीं हुए हैं. So our bodies do not naturally acclimatize to that. So when I got pregnant in high altitude, in low oxygen, so everything that is considered normal in plain areas is turned the other way in high altitude. I'll give you an example. जैसे कहते हैं कि प्लेन्स में आप प्रेग्नेंट हैं, आप आयरन रिच डाइट खाइए, राइट, पालक खाइए, खजूर खाइए, गुड़ खाइए, एंड यू नो this is what is told to us, that having an iron rich diet is very good during pregnancy. But in high altitude, you are not supposed to take iron rich diet, because all that iron needs oxygen to break it, you know, so that your body accepts it. It needs oxygen to break it down. Now there is very less oxygen. तो आपका शरीर, अगर आपने ज्यादा आयरन कंज्यूम किया, आपने ज्यादा आयरन टैबलेट्स खाए हैं और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हो सकता है कि you may self abort the child. So that was a fear, that I should take care of myself, that I don't cause any harm to this fetus. I was certainly thinking about my eldest son, जो उस समय 2.5 साल का था, कि लड़ाई लगी है, तो इस बच्चे को how am I to handle him so that his psychology doesn't get affected. मेरे हस्बैंड जंग लड़ रहे थे. द्रास का एरिया, अगर आपने नाम सुना है, you can just Google it and see. Dras is the second highest, coldest inhabited area in the world. तो वहां कारगिल की लड़ाई का एक बहुत भयावह एक मंजर था. तो उस एरिया में हस्बैंड है. So naturally my thought was towards him also, that hope he comes back soon, that hope he comes back soon, and we are together as a family. लेकिन that I was wearing a uniform changed the equation. मुझे लगता है मेरा वर्दी पहनना मेरे इन सब चीजों पे भारी पड़ गया. It totally simplified things in my head, that I am wearing uniform, I am an army officer, I know what my husband is doing, I know what to say to my child, and I should be brave enough to take care of everything that is coming my way. वो एक वर्दी पहनना ही अपने आप में एक आर्मर जैसा हो गया, एक शील्ड हो गई. और मुझे लगता है कि आप जब किसी एक हायर पर्पस के लिए काम करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपका साथ देता है. In the end, everything worked out. My husband came back safely. We won the war. Country had a victory. उसका हिस्सा मैं बनी. उसका हिस्सा मेरा पूरा परिवार बना. मतलब I think it's a rarity कि एक पूरा परिवार उस जंग में शामिल है, अनबॉर्न बच्चा भी. एक आपसे शेयर करूंगी, एक रेडियो चैनल ने मुझे नाम दिया वॉरियर 2.5, कि एक आप है, एक आपके साथ बच्चा है, और एक वो 0.5 जो बॉर्न भी नहीं हुआ है. So I think that totally sums it up. So हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत आसान था, मुश्किल था, लेकिन मुश्किल के आगे निकलना उस समय और कोई चॉइस नहीं थी, और वो मेरी हिम्मत बन गया.
So, ma'am, like they have given you the right title of Warrior 2.5. I think so, yes. Definitely, ma'am, it was your warrior mindset that kept you going through those difficult situations mentally, physically, and emotionally. I would say, because it was you had to handle yourself, the country, and even your kids, both of your sons. So, ma'am, definitely, we are so proud, and we are just getting goosebumps listening to your story. Honestly, I will not say that. I will say I am proud of myself because when I look back, I really feel proud of myself as a woman, that वो क्या circumstances थे और आप जब उस समय से निकल जाते हैं ना और पीछे मुड़ के आपको देखें तो you actually feel that yes, shabash, and given a chance I'll do it exactly the same way again. आप मिसाल बन गए हो हम सबके लिए कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती अगर मन में हम लोग ठान ले तो थैंक्स. Yes, ma'am. So, ma'am, you were a warrior back then, and now also you are a warrior, but you are more of a warrior mindset coach now, as we know. And, ma'am, now you're helping thousands of defense aspirants through your SSB boot camps and other motivational talks and one-on-one discussions. So, ma'am, what would you like to tell the youth on developing this kind of warrior mindset? My journey from becoming a warrior to warrior mindset coach, I think it's a very natural progression. क्योंकि जो चीज आप सीखते हो आपको वो आगे सिखानी है. What mindset you develop, that has to be shared, because at the end of the day your body will only follow your mind. Like they say that if your mind can believe it, you can achieve anything. So this warrior mindset has to be shared, and this is exactly what I'm doing with young boys and girls. This is exactly what I'm doing with corporates. क्योंकि जंग का मैदान कहीं भी हो सकता है. जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए उस दौर को नेविगेट करना भी एक वॉर जोन है. जब हमने कोरोना के टाइम में देखा कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है और उसके अंदर से अपने आप को सेनिटी से आगे निकालना, अपना ही नहीं अपने आसपास हर एक का ध्यान रख के आगे निकलना, आई थिंक दैट रिक्वायर्स अ वॉरियर माइंडसेट. घर में तो आप सबका ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन जब आप ऑफिस की तरफ देख रहे हैं, इफ यू आर अ लीडर एंड यू हैव गॉट अ टीम एंड यू गॉट अ बिजनेस टू लुक आफ्टर एंड यू गॉट वर्क टू डू, उसमें आप अपनी पूरी टीम का मोराल हाई रखकर आगे कैसे बढ़ रहे हैं कि ये मुश्किल का दौर आगे निकले. हर चीज में वॉरियर माइंडसेट लगता है, हर चीज में, राइट फ्रॉम अ हाउसवाइफ टू अ चाइल्ड टू एन ओल्ड एज पर्सन. हर कोई एक जंग लड़ रहा है. तो वॉरियर माइंडसेट सिर्फ एक युद्ध में लड़ने जाने की बात नहीं है. तो इसको सबसे पहली चीज which I would like to share through you with all your audiences, never feel that you cannot do something. वो जो fear of not being able to perform है ना, मुझसे होगा नहीं, उसको आपके दिमाग से निकाल. फेलियर हो जाएगा, मैं हार जाऊंगी, I will let down people. Oh, what will happen if I am not up to the mark? इस तरीके की इतनी एंजाइटी इस समय यूथ के दिमाग में है. हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है और हर कोई फेलियर से डर रहा है और हर कोई सोच रहा है कि मैं पहली बार में बुलसआई हिट कर दूं. It doesn't happen like that. It doesn't happen. So just fight that fear of failure. And I will just say one line here, that do not fear fear. जिस दिन आपने अपने डर के साथ में आंख से आंख, एक मिनट ठहरी, चश्मा हटा के बोलती हूँ, आंख से आंख मिला के देखा ना डर को, उस दिन आपकी जीत हो. That day you are a warrior.
when you stand up in front of fear and say, I'm not afraid of falling, because every time I fall, I will rise up. Every time I face a failure, I will rise up again. लेकिन उसके साथ ये भी कहना बहुत जरूरी है कि जितनी बार आप गिरते हैं उतनी बार उठना तो जरूरी है, लेकिन उतनी बार माइंड में सोचना भी है कि गलती कहाँ रही। एक बड़ी फेमस पोएम है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहां गलती रही सुधार करो, एंड दैट इज एग्जैक्टली द होल सम ऑफ लाइफ, एसेंस ऑफ लाइफ। और इस बार इंटरनेशनल विमेंस डे में हमने कहा ब्रेक द बायस, तो मैं विमेंस डे की बात से वो टॉपिक निकाल के चलूंगी, ब्रेक द बायस। एवरीवन शुड फाइट दैट ब्रेक, यू नो, दैट बायस कि हमसे हो नहीं रहा, हम कहीं कम पड़ रहे हैं। No, the day you tell yourself that I have a dream and I am going to follow my dream, you just mark my words. You just mark my words and write it down completely. Somewhere, जो जगह आप रोज देखते हैं, कैपिटल बोल्ड आइटलिक से एक बड़ा सा लिख के लगा लीजिए, that only dreams come true. And here the key word is only. अगर आपने सपना देखा ही नहीं तो आप सच किसको करोगे? सो ओनली ड्रीम्स कम ट्रू। सो अपने आप को सपने देखने की आजादी दो और सपने पूरे करने की हिम्मत रखो, क्योंकि सपने की दिशा हमेशा मुश्किल भरी है, हमेशा उसमें आपको कठिनाई मिलेगी। You will have to break your comfort zone. You will actually have to go beyond yourself. But once you break your comfort zone, only dream will come true. And that day, you will feel proud of yourself. जैसे मैंने भी बोला कि मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे अपने ऊपर फख्र होता है कि yes, I did not give up. I did not give up. मुझे किसी की validation नहीं चाहिए. No. So these days when we see the people scrolling Insta, scrolling Facebooks and looking for likes and looking for thumbs ups and looking for validation, we look for validation from those people who are not valid to validate us. should look for self validation. मैं क्या करना चाहता था या क्या करना चाहती थी, क्या मैं उसे कर पाई? उसे करिए, जो सोचा है उसको करिए. So yours will be the sky and yours will be the glory only if you stand by your dreams. And remember, only dreams will come true, nothing else. और किसी दूसरे का नहीं, आपका अपना सपना, right? अपने सपने को जियो, अपने सपने को पूरा करो. So yeah, that's what I want to say. Thank you so much, ma'am. And warrior mindset, it's really making me to join your sessions, ma'am. And I'm sure all the audience should. It's so good because people don't know all these things, what you are saying. And especially if someone like you, who is there to guide us, it's really a light, when you are spreading the light, keep doing your amazing work, ma'am. And we are really looking forward to join your classes too. And all power to you. And ma'am, you also have your own YouTube channel called Shaurya Tales, जहाँ पर आप bravehearts का stories, military operations of Indian Army सबका story share करते हैं. तो ये thought process आपके दिमाग में कैसे आया कि ये सारी कहानियाँ YouTube channel के through share करनी चाहिए? Leadership emerges in crisis. It's a very famous saying. Winston Churchill कह के गए हैं कि we should never waste a good crisis. तो शौर्य टेल्स की कहानी क्राइसिस के अंदर से निकली. जब लॉकडाउन लग गया and we could not go out. Before lockdown, I was very active
traveling a lot, moving a lot, speaking in schools, colleges, universities, taking corporate sessions, national, international. It was like a whirlwind. और उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया तो हम सब घर के अंदर, लेकिन जो काम करना है, सी only dreams come true. My dream, my passion is to motivate, is to speak, is to share the things that people feel is not within their reach, but there are role models who tell you कि possible है, हर कुछ possible है. So now with the lockdown and with restrictions, बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो अब क्या करें? So my kids gave me an idea. मेरे बच्चों ने मुझे idea दिया कि why don't you start a YouTube channel? And so the first doubt in my head was, कौन देखेगा मेरा चैनल? तो कोई बात नहीं, कोई नहीं देखे, आप वो करिए जो आप करना चाहती हैं. So I took their advice because this young generation is very smart. They know exactly what the thought process should be. So I will totally say thank you to my sons. And they said, "No, you should start a YouTube channel, and if for no one else, at least you have done your bit, and you spread the light, and you spread the motivation." क्योंकि ये बड़े bleak times हैं, बड़े उदासी भरे समय हैं. मैंने कहा मैं तो कहानियां सुनाना चाहती, बहादुरों की कहानियां सुनाना चाहती, जो लोग वो करके गए हैं वो हम सबको जानना है. तो फिर एक थॉट मैंने आया कि चलो 10 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे ना, I'll be happy. So I told my family members, you subscribe, you subscribe, you subscribe, I should have minimum 10 subscribers. And then I thought, chalo, my grandkids, this is a legacy I'm leaving for my grandkids. और मैं बड़े डाउट के साथ आपको एक कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये सेल्फ डाउट हर एक के दिमाग में आता है कि क्या होगा. आप भी YouTube चैनल चलाती हैं तो आपके दिमाग में भी ये थॉट आता होगा that how it's going to work out. लेकिन जब मैं वो पहली कहानी लिखने लगी, so I researched a lot and I decided that my first story is going to be on Captain Shaurya Tales, the martyr, जो हमारी पहली कैजुअलिटी थी कारगिल के समय, और उनकी बड़े भयावह तरीके से, it was a very in contradiction with the Geneva Convention that his body was mutilated absolutely by the Pakistanis. So I said I have to give him the tribute. So on the day of his martyrdom, I launched my channel. So my first story was Shaurya Tales. And believe you me, when I was sitting down and writing that first script, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास I could sense presence. कि ये एक पावर थी कि ये कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये कहानी सुनाई जानी चाहिए. And then I was in a different world. तब मेरे दिमाग से सारे डाउट्स हट गए, all cobwebs were cleared, and I realized this mission that I have to tell these stories. And today we are sitting at 53 channels, 53 episodes, almost 4,000 subscribers, not a single dislike, not a single thumbs down. And मुझे ऐसा लगता है कि असली कमाई इस चैनल की यही है कि इतना प्यार और इतनी एक जो लॉयल फॉलोइंग है, and everyone is connected with the thought that देश के लिए जो करके गए हैं उनकी कहानियां सुननी है. और मिलिट्री ऑपरेशंस की जब मैं कहानियां सुनाती हूँ तो दे आर इनफैक्ट लीडरशिप लेसन्स. क्राइसिस के समय वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होती है, जो एक माइंडसेट को डेवलप करना एक मेंटल मसल है. इट हैज टू बी वर्कड सो दैट वी कैन यूज इट टू मैक्सिमम. और तभी ये होता है when we are faced with the situations which test our capability. तो ये मेरा चैनल है और ये मेरा मिशन है. And like you said, through your channel, a lot of people have connected with the same, passion for listening to
the stories of brave hearts of our country. And ma'am, actually हम लोगों ने भी देखा है, we keep getting these video messages of yours. तो हमें पता है कि आपकी stories हर जगह share होती है. So yes, so and it, and like when we listen to you, we feel that power. We feel that we are actually living, and we are living that moment right now. जैसे कि आप वो कहानियां सुनाते हो, वो बिल्कुल ऐसे real लगती हैं, with that power and grace and with all the emotions. So I feel everybody, from anyone from any field, is connected through your stories. Thank So you so we much. Means a lot. we would like to tell our audience, those who do not know about this channel, please go and listen to the stories that ma'am share on her channel Shaurya Tales. And ma'am, we will also share the link, and we will also subscribe to it. Please do. Thank you. Yes, ma'am. Actually, So मैं आपको बताना चाहूंगी, many times people when they have the YouTube channels, they always say like, subscribe, share. So I always say one thing, that like करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, पर शेयर जरूर. ये कहानियां फैलनी चाहिए. और एक चीज मैं कभी नहीं कहती कि सब्सक्राइब करो. I never tell people subscribe to my channel, because I feel that if you actually feel it inside you that these stories make a difference to this nation building, then you will automatically subscribe. But I will not request you to subscribe. This is your nationality, this is your Josh, this is your country. मेरा काम है कहानियां लाना, और ये कहानियां मैं सुनाती रहूंगी जब तक मैं कर सकती हूँ. I'll keep doing it. yes, ma'am. Thank you for sharing your stories with us. Ma'am, so I would like to discuss about one serious issue, especially with regards to girls joining the Indian Army. So, ma'am, as we know that training conditions are pretty harsh, and the schedule is hectic, and there's a lot of physical movement and workout for girls as well. And girls have to manage their periods during that. So, ma'am, can you please elaborate more on this and advise how young girls who are joining the Indian Army, or who are interested in joining the Indian Army, can handle periods? Maulshree, when I joined army, I was 22 years old. So मेरा college complete हो गया था. So what I'm trying to tell you is that आज तक जो लड़कियां फौज में आती हैं, वो college complete करके ही आती हैं. किसी की engineering हो रखी है, किसी ने law किया हुआ है. So the girls, when they come to army, they are graduates. By this time, body is more or less shaped. Right? But now the recent decision of Supreme Court that girls are going to come into National Defense Academy, I am just so proud to say that the girls who are going to come into NDA, they have already started with their SSBs. और मई से जो है NDA के अंदर पहला बैच women cadets का आएगा. And these girls can be anywhere between 16 and a half to 19. That is the age. Girls are also joining army as soldiers. और उनकी एंट्री की उम्र तकरीबन 17 साल. So 17 years and above. तो जब इतनी यंग एज की लड़कियां फौज में आ रही हैं, तो आप देखिए कि their body clocks have not yet fully found that cycle. शरीर अभी बन ही रहा है. और ऐसे में जब आप अकेडमी में जाते हैं और एकदम से आपके शरीर को बहुत एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है. मेंटल स्ट्रेस इसलिए क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं होते हैं उतनी कठिन ट्रेनिंग के. सो इन इनिशियल डेज देयर इज लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज हर चीज टाइम से हो रही है. हर जगह आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप उतना फिजिकल्स में, उतना स्विमिंग में, उतना हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं. सो every single minute of the day is structured. जब बच्चों को आदत नहीं होती है सब करने की, तो उनके शरीर को एकदम से एक झटका मिलता है. And then the body reacts in very strange ways. किसी को periods normal होते हैं, ये एक rare condition. किसी के periods non-stop चलने लगते हैं, that is one condition. किसी के periods बिल्कुल रुक जाते हैं, that is another condition.
और मैंने अभी अपनी एक रीसेंट टेड टॉक दी है, दैट इज माय सेकंड टेड टॉक, और उस टेड टॉक का मैंने टॉपिक ही यही लिया है, विमेन, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड पीरियड्स, सो दैट वी जनरेट अवेयरनेस अबाउट हाउ टू हैंडल पीरियड्स इन ट्रेनिंग, क्योंकि इस चीज के लिए हमें कोई तैयार नहीं करता. सो आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या तकलीफ आती है. फॉर अबाउट 3 to 4 months of the training, I had no bleeding, I had no periods, I was under a lot of mental stress कि मुझे periods क्यों नहीं हो रहे. तो मुझे डॉक्टर ने क्या बताया? Doctor told me that this is a natural way of body reacting to high stress. और जैसे ही आप वापस अपने एक नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, your body will start responding again normally. और बिल्कुल वही हुआ. ट्रेनिंग खत्म हुई. ट्रेनिंग के बाद जब उतना हैवी फिजिकल या मेंटल प्रेशर नहीं रहा, तो बॉडी क्लॉक ने वापस नॉर्मल काम करना शुरू किया. आगे चल के मेरे 2 बेटे हुए. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डरना नहीं है किसी को. इट्स ऑल नॉर्मल. एंड ऑल्सो आज से ही तैयारी शुरू करिए, चाहे आप फौज में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, लेकिन पीरियड्स तो हर एक को कंफर्टेबल चाहिए ना. No one wants painful periods. No one wants those unending days of stress and tension. So what I want to tell to everyone who is listening, that encourage yourself, encourage others, encourage young girls to be physically active during periods. Yes, दर्द है, पेन है, लेकिन जब हम वॉक करते हैं, जब हम हल्का हल्का एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हमारे को तैयार करती है उस दर्द को अच्छे से हैंडल करने के लिए. सो वी मस्ट डू लाइट एक्सरसाइजेस, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वी मस्ट डू सम सर्टेन योगासन्स. और इसके ऊपर मैं बहुत काम कर रही हूँ. किसी दिन तसल्ली से बैठ के हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू टेक एवरीथिंग राइट नाउ. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पीरियड शुड बी टेकन नॉर्मली, क्योंकि ये हमारे लिए इससे ज्यादा रूटीन औरतों के लिए और कुछ नहीं हो सकता. तो क्यों इसको तकलीफ में रखना है. और दूसरी चीज, अपग्रेड योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ यूजिंग प्रोडक्ट्स. यूज मेंस्ट्रुअल कप्स, यूज टैम्पॉन्स, क्योंकि आपको एक हल्का सा एग्जांपल देती हूँ कि जब आप एकेडमी में हैं और आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, आप 20 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 15 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 35 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 20 केजी का आपने बैटल लोड लगाया, आपके हाथ में राइफल है, भारी जूते हैं, रेडियो सेट है. You cannot say that I will not run because I'm having periods. You will run because this is military training. No one will give you a break. So now, how to handle it properly? तो अगर आप पैड्स लगा के दौड़ रहे हैं, you will have rashes. और जब दौड़ने के समय आपके पीरियड्स, आपके सैनिटरी नैपकिन के एडेसिव हट सकता है और आप स्पिल कर सकते हैं. All these things cause lot of discomfort. But if you're using a menstrual cup, you can run, you can swim, you can dance, you can spend long hours on your chair if you are sitting and working. So every girl, every woman must try to make it as comfortable and as convenient as possible. So have good diet, drink plenty of water, do light exercises, do yogasans, do light physical activities, and use products that are going to keep your confidence intact. रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, मतलब कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है. वो कहते हैं ना, if you have to fall, don't fall backwards, fall forward. गिरना भी आगे है. Don't bounce back, bounce forward. मतलब पीछे ही नहीं जाना है. पीछे आप सिर्फ एक स्थिति में जा सकते हो. तो आप एक कदम पीछे हटते हो और देखते हो कि मैंने गलती कर दी. सिर्फ तब आपको अलाउड है पीछे जाना.
So true, Yeah. ma'am. Yeah, this what you have shared is really helpful for everyone to understand how we can upgrade. And as you have started talking about this topic, that will also help. We have our own mental blocks regarding all these stuff, especially females. So thank you. Like, and obviously we will connect again for this, no doubt. And then, what is your perspective on women leadership in the defense forces and life in general, and how leadership can emerge in crisis? This is a journey of almost 30 years. The women started coming to army. The first batch got commissioned in the year 1993. और तब से लेकर आज तक बहुत लंबी जर्नी रही है. And this journey has been full of sweat and blood. And it has been a journey of dreams. So you see, when we started taking women in army, a very handful, a batch of only 25 was there. So that first batch, when it passed out, we were handful, only 25 in this million strong army. Now, slowly, gradually, we are thousands. But still, when we look at this big, magnitude of Indian armed forces, they are still a drop in the ocean. But this journey has been, a journey of challenges, overcoming challenges, proving to the world that what you are made of, and also opening new avenues for the generation to come. अगर मेरे जनरेशन ने अपना काम सही नहीं किया होता तो हम आज की जनरेशन से आंख मिलाने के लायक नहीं. But today my generation demands it from the young girls who are coming into army that buck up, you owe it to us because we have given our sweat and blood to this, and those girls are doing us so proud. आप देखिए, जब फौज में लड़कियों को लेना शुरू किया तो हम बहुत बहुत, एक तो पहली चीज बहुत कम नंबर्स में थे. फिर हमारी ट्रेनिंग बहुत छोटे समय की थी, कम समय की थी. Men were being trained, male cadets were being trained for 9 months and above, and we were being trained only for 6 months. So the entire training had to be truncated into 6 months. So we had to learn double time. Slowly, gradually, when women started performing so well, and then Kargil happened. Kargil totally changed. Indian Army realized that this is the human resource which is worth investing time and effort into. And so you see, slowly, gradually, from the initial intake batch of 25, it was increased to, almost 100. Where we were earlier only a very small platoon, now we are battalion. That is in training academy, I'm saying. We were given a number, every army person gets a number, right? Every person has a number. तो पहले जो हमारा नंबर होता था वो WSES होता था, यानी Women's Special Entry Scheme. It was a scheme. It was not even a commission. But slowly, gradually, after Kargil, they started giving women the SS number. That is the Short Service Commission number. That is, मतलब उससे एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया. अब जब लड़कियां परमानेंट कमीशन हो रही हैं, so now they will be given a permanent commission number. And where we were only taken for 5 years, now after 30 years, the women, eligible women officers, will be commanding their units. और अब तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के रास्ते खुल गए हैं. और इस बार आपने 26 जनवरी की परेड में देखा होगा कि राफेल उड़ाने वाली पहली फाइटर पायलट इज देयर. It gives, like, I just want to tell these girls that you just take flight, उड़ो बस तुम, and do us proud. और आगे आने वाला समय is naturally going to be very challenging, क्योंकि हर समय के साथ नया दौर आता है, नए challenges आते हैं, नई expectations आती हैं.
और आपको अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि ट्रेडिशनली आर्मीज has been a male dominated environment. तो आपने अगर सपना देखा है तो सपना पूरा करने के लिए आपके अंदर हिम्मत भी आप ही को लानी। So this journey has been beautiful. मुझे लगता है इसके ऊपर तो एक पूरा पेपर लिखा जा सकता है कि ये क्या 30 साल की जो जर्नी रही है, बहुत अमेजिंग, बहुत बहादुर लड़कियां हुई, एंड आई फील वेरी प्राउड। Thank you, ma'am. Whatever you have shared just now is like seriously, that makes a lot of sense. And yes, ma'am, like you said, the paradigm has shifted. Everything now it's a permanent commission for women in the Indian Army, and women are doing way better than men. I would say, like we see, they are. I will not say that. I will not say that women are doing better than men. We should do away with that kind of thought process. We should try to do the best that we can do at that point of time. See, times move. आगे जाके आप सोच सकते हो कि अरे उस समय मैं ऐसा कर सकती थी, उस समय मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन जिस समय आप उस सिचुएशन में होते हो, तो आपको उस समय के हिसाब से यू हैव टू गिव इट योर बेस्टेस्ट, मतलब 100 भी नहीं, 110%. And it's only then that you improve, only then you become evolved, and only then you become your 2.0 version. True, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sharing that. And ma'am, like everybody, must be asking you about your success mantra, your leadership mantra, and your motivation mantra, and all that. But now, to conclude this session, I just want to ask you in the end, what is your happiness and your personal mantra that you still hold on to, and you would like to share with young girls and women? To everyone, I'll give you my mantra. And I'll give you my mantra only on one condition, that you are also going to adopt it. Right? Pura nahi to thoda sa, but you will have to imbibe it, make it part of your life. And so my mantra is never give up. Never, ever, ever give up. कोई भी कंडीशन हो, कोई भी मौका है, कभी भी आपके सामने चॉइस हो, to go ahead or to give up, always choose go ahead. Never fear fear. Failure is always going to bring you down. Fear is always going to call you back to the comfort zone. But you say, no, my journey lies beyond that. And so I'm not going to give up. I'm not going to give up. I'm not going to give up. So this is my mantra. And when I don't give up, I get happy, because I find a new me. It's just as if that a new me is waiting for me across that door. And so when I open that door, I find a new me, which is a better version of myself. And I get happy. And so I always think that you are alive as long as you are relevant. The day you stop being relevant, you are redundant. Your story is over. You are dead. And I don't want to die. Not yet. So I am going ahead, challenging myself every day. And this is what I give you. I give you my mantra, and I expect it from you, that you are also going to imbibe it. For sure. We all will. Ma'am, our respect and gratitude to you for giving us your time and making us realize that within us is the light. All we need is to trust ourselves and stop seeking it outside. Thank you so much, and keep doing amazing work what you are doing, ma'am. We are so proud of you. Thank you. एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much. It's been an amazing evening. I really enjoyed your line of, your thought process, the way you framed the questions. आपने पूछे जैसे मुझसे सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you very much, and wish you great innings ahead. And one more thing, I like the name of your program, StreeMing. This is very creative.
Keep it up. Keep it up. Good Josh.